Good morning, all of you. I hope all are well. And today we start a new chapter inside our Earth. Okay, so first chapter, environment, we finished it. Okay, now we start new chapter. So all you know about the Earth is a dynamic planet. It is a constantly undergoing changes inside and outside. In both sides, they have the little bit changed. Okay, have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? So, many curiosity you have many questions in your mind how the earth is made up and what is the main function. Yeah, you can see the what is the main materials inside of the earth. Okay, such type of the questions you already think. Okay, so now interior of the earth. So, we learn about just like an onion, the earth is made up of the several concentration layers with one side inside another. Figure number 2.1 you can see the easily. Okay, it is the interior part of the earth. So first one is crust. You can see the see here. Okay, first one is interior part crust, then we can learn about the mantle, and last one is the inner core, yeah, core. Okay, so they are the three layers of our earth surface, yeah, earth in interiors we can say. Okay, now the uppermost layer over the earth surface is called the crust. First one is called crust. It is the thinnest of all the layers. All the layers means there are the three layers and it is the thinnest layer. Okay, it is the thinnest layer of the earth. It is about the 35 kilometer. What is the total density you can say? That is the 35 kilometer on the continental masses and only 5 on the ocean floors. और उसमें से भी जो कॉन्टिनेंट में है कॉन्टिनेंट मासेस में देयर आर द 5 किलोमीटर ओशन फ्लोर्स. ओके, now the main minerals constituent of the continental masses are the silica and alumina. तो मेन जो इसमें जो मेन मेटल हैं जो यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, या मेटल जो इसमें मिलते हैं, नॉट यूज होते हैं, नॉट मिलते हैं, वो हैं हमारे silica and alumina. Okay, silica and second one is alumina, that one particular one, yes, alumina. Okay, it is thus called the shell. इसलिए इसको क्या कहते हैं? That is called shell also, shell also. Okay, that is called shell, silica and alumina. The oceanic crust mainly consists of the silica and magnesium. It is therefore called sima, silica and magnesium. Okay, the oceanic crust. Okay, which one? The oceanic crust. It is therefore the called sima. Figure number 2.2. Where is the 2.2? Here is the 2.2. Okay, so continental crust, then continent you can see easily, and ocean crust. Here is the ocean crust. Okay, it is the called ocean crust, and here is the ocean. Okay, so here is the ocean and it is called ocean crust. That is the part called ocean crust. So here we can easily find out the sima means silicon, yeah, silica and magnesium, not silicon, silica and magnesium. Just beneath the crust is the mantle with extent up to the depth of 2900 kilometer below the crust. How many? 2900 kilometer in the below to the earth. So here is the mantle. Which one? It is called mantle. Okay, and uppermost layer called crust. Okay, so now the deepest mine in the world, it is the South Africa. It is the about 4 kilometer deep. In the search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometer deep. How many? 6 kilometer deep in the earth crust. Okay, so deepest mine, the deepest mine of the world related to the South Africa, and search for which one? Oil. Okay, to reach to the center of the earth, which is not possible. Suppose the question raised, can we reach there in the center of the earth? No, because why? You will have to dig a hole 6000 kilometer deep on the ocean floor. Where? In the ocean floor. Where is the ocean floor? Earlier also I told you. Okay, it is called ocean floor. Okay, so it's not possible
कि वी डग आउट द 6000 किलोमीटर, deepest mine in 4000 kilometer, 4 kilometer only, 4 kilometer only, not 1000, 4 kilometer only. Okay, now the innermost layer in the earth with the radius of the about 335 3500 kilometers, it is mainly made up of the nickel and iron in the called नीफे. What is called? It's नीफे. इसे हम कहते हैं नीफे. और कहाँ कितना है? 3500 किलोमीटर अंदर तक. ठीक है, innermost layer. And what is the meaning of Nife? Nickel and ferrous. Ferrous means iron. The central core have very high temperature and pressure. और सेंटर में 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है यहाँ पर. ठीक है. द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली द 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. हाउ मेनी? 1% ओनली. ओके. 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल and 15% of the makes the core. So least crust and सबसे ज़्यादा या हायर कंसिस्ट कौन करता है? 84 मेंटल. ठीक है. और 15% मेक द कोर. कोर का जो एरिया है, जो 6000 डिग्री सेल्सियस जहाँ का टेम्परेचर है, जहाँ पर सभी जो है वो बिल्कुल ही किस में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है, उसको हम कहते हैं कोर. द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर. तो हमारी अर्थ का जो रेडियस है, नेट का रेडियस 6371 किलोमीटर है. ठीक है. नाउ रॉक्स एंड मिनरल्स. ओके. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस rocks and minerals. Yeah, you can say yes, rocks and minerals. This one we can read in this time. Okay, so any natural masses of the minerals matter that makes up earth crust is called a rock. Any natural mass of the minerals that is make our earth, yeah, crust only, not earth crust, that is called rock. Rock can be different color, size and texture. रॉक्स भी अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, टेक्सचर अलग अलग होता है. तो इसी के आधार पर या उसी बेस पर हमने इसको अलग अलग 3 पार्टों में इसको, देयर आर 3 पार्ट्स इन द मेजर पार्ट्स ऑफ रॉक: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस, when the molten magma cools, where is the magma now? Magma in earth crust. Okay, we learn about, yeah, here we can see magma in when the volcano are erupt. ये जब यहाँ से बाहर निकलता है तो ये मैग्मा है. ठीक है. और उसी के बाद फिर ये फॉर्म होती हैं हमारी अलग अलग igneous rock, sedimentary, sediment then transfer to the metamorphic rocks, that is called rock cycle. ओके, इसको हम फिर पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद. अभी हम पढ़ने वाले हैं कि रॉक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रॉक. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड. जब बहता हुआ वो मैग्मा जो है वो क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है, तो उसके बाद वो ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है. तो देन सच टाइप ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक. इस तरह की जो रॉक्स जो बनती हैं उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि ये सबसे पहले बनती है तो इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स: इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. यानी कि इंट्रूसिव जो अंदर ही बनती है, एक्सट्रूसिव जो बाहर आकर के बनती हैं. ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज? सो यू एवर सीन in the newspapers, yeah, in TV channels, yeah, whatever you know about that, the volcanic eruptions, you heard about it. Okay, recently also one volcanic eruption in the Ireland, I think. Yes, there you can see, you seen there, I think. So lava is actually fairy and red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. तो कहाँ से आता है? अंदर से आता है. वो ज़मीन के अंदर से, अर्थ के अंदर से वह लावा के रूप में बाहर निकलता है. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down. जैसे वो बाहर निकलता है तो बहुत तेज़ी से वो ठंडा होता रहता है. ठीक है. तो and became solid. Rocks formed in the such a way on the crust are called extrusive. तो जो बाहर निकल के आ गई हैं उन्हें हम एक्सट्रूसिव कहते हैं. ठीक है, जो बाहर निकल के आ गई हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स. दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल बेसाल्ट. such type of the example of the such type of the rocks are called basalt. Okay, now the Deccan Plateau is made up of the basalt rocks. जो डेक्कन प्लेटू है इंडिया का, जो साउथ का इलाका है, वह किससे बना हुआ है? इसी तरह की
रॉक से बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्डन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और कई बार जो है कि वह जो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल के आया, वो अंदर ही जम कर रह गया। तो उस तरह की जो चट्टानें अंदर बनती हैं, ज़मीन के अंदर बनती है, उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव। ठीक है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स ग्रेनाइट इन द एग्जाम्पल ऑफ सच ऑफ रॉक्स। और कुछ इस तरह के जो धीरे धीरे ठंडा होता है और अंदर ही जम जाता है, तो इस तरह की जो चट्टानें बनती हैं या रॉक्स बनते हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ओके। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू द प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ द स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो जो ग्राइंडिंग करते हैं, जो हमारे घरों में होता है सिलबट्टा जिसको हम कहते हैं, तो वह भी एक तरह के किस तरह के चट्टानों से बना हुआ है, वह है ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है। नाउ rock rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into the small fragments. These smaller particles are called sediments. तो रॉक्स आप उसमें टूटती हैं, फूटती हैं। ठीक है। तो उनसे जो दूसरे नंबर की जो रॉक्स बनती हैं, वो हैं हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्ट इनटू द डिपोजिट बाय विंड वाटर एक्स्ट्रा। और यही सेडिमेंट जब एक के बाद कुछ समय के बाद पानी से, हवा से क्या होता है, जमा होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, तब बनती हैं हमारी तीसरे नंबर की रॉक्स, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। दीज लॉस सेडिमेंट्स आर कंपेयर्ड एंड हार्डनेस थ्रू द लेयर ऑफ द रॉक्स। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, ये सेडिमेंट्री कहलाएंगे क्योंकि एक के बाद एक जमा हो रहा है, धीरे धीरे जमा होकर के बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, ओके, इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो सैंड से बना हुआ है, सैंड स्टोन कहते हैं। ठीक है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ द प्लांट्स, इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम, जब कभी उसके अंदर कुछ कुछ रहा होगा। ठीक है। कुछ ऐसे पत्थर होते हैं कि जो अंदर से टूटने पर आपने देखा होगा कि उसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि पुराने समय का, जैसे हम नदी के किनारे के जो पत्थरों को देखें, वो सैंड से बने होते हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड सैंड स्टोन्स। ठीक है। तो गोल से आपने पत्थर देखे होंगे अगर कभी नदियों के किनारे। सो नाउ द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज टू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये दोनों रॉक्स बन मिल करके फिर क्या करती है, एक तीसरी रॉक्स को बनाती है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक। एंड ग्रेट हीट एंड प्रेशर, किसकी वजह से, ग्रेट हीट एंड प्रेशर की वजह से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इंटू द स्लेट एंड लाइमस्टोन इंटू द मार्बल। ठीक है। ये दो बड़े एग्जाम्पल है, मार्बल और लाइमस्टोन, जो मेटामॉर्फिक से हैं। पहले ये क्या थे, दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। ठीक है। इग्नियस के और लाइमस्टोन इज द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये दोनों चेंज होकर के बन जाते हैं, एक बनता है लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है, और स्लेट चेंज, जो क्ले होता है वो चेंज हो जाती है स्लेट में। ओके, सो टुडे वी लर्न that one, rocks and types of their rocks. Thank you.